Welcome to my channel DSE, that is Dynamic School of Excellence. This is your educator Ruby Gupta, and today I'm going to discuss Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Now this chapter is from Class 10 English. सबसे पहले start करते हैं Nelson Mandela से. तो who Nelson Mandela was? That's a very important thing. Now he was born on 18th July 1918. And he passed away on 5th December 2013. Now this date you have to remember, that's very important. So Nelson Mandela lived for 95 years. So when he died in 2013, he was 95 years old. तो ये तो है नेल्सन मंडेला की लाइफ और डेथ, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, that is very important. So he was a political leader. He was also the member of African National Congress. He was a philanthropist. What is the meaning of philanthropist? The people who work for humankind, the people who work for humanity, for human welfare. तो जो लोग मानवता के लिए काम करते हैं, उन्हें कहते हैं philanthropist. Now this happened, and he served as the president of South Africa from 1994 to 1999. Now this is again very important thing about Nelson Mandela. For his lifetime, when he was a young boy, he started realizing the importance of freedom, and he realized that there was apartheid system. इसका जो pronunciation है, आप इसे apartheid नहीं पढ़ेंगे, it is apartheid. So the pronunciation is apartheid. So he fought against apartheid system which was prevailing in South Africa. I will explain about this in detail in the next slide. Now the next thing is Nelson Mandela spent 27 years in prison. This you have to remember. जब उन्होंने आवाज उठाई इस apartheid system के लिए, apartheid system is actually the white rule. White were ruling there, and black were denied all their rights and opportunities. So this was apartheid system. So when Nelson Mandela raised his voice against this system, he was put behind bars, and he was sent to Robben Island. Now this you can remember, I'm giving you some extra information, ये चीजें book में नहीं है, but आपको पता होना चाहिए. So this was Robben Island. So he lived there as a prisoner. He spent 27 years. सबसे important चीज है. तो 27 साल उन्होंने जेल में बिताए. Robben Island पे उन्हें भेज दिया था as a prisoner. Not only that, he was beaten mercilessly. उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता था वहां पे. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है. Now this is the struggle of Nelson Mandela, but still he did not give up. उन्होंने हार नहीं मानी, और finally 1994 में Africa was declared as a democratic nation. It became Democratic Republic. वहाँ पे elections हुए थे, and Nelson Mandela became the first black president of new democratic South Africa. So this is a very important information about Nelson Mandela. Now let's understand what is apartheid system and what was the impact of this apartheid system on the black people. तो उस समय क्या हुआ था कि जो ये apartheid system है, basically in this white people were ruling. So white people were considered superior. So what happened here, that in apartheid system, जब एक system होता है ये apartheid system, तो उसमें white people are given more importance, and the people of other races, तो सिर्फ white को importance मिलती है, other races are mistreated. They are not at all given equality, equal rights and all. So there was racial discrimination. तो discrimination was on the basis of the race. जैसे white एक race है और black people की एक race है. तो इस तरह से race का मतलब यहाँ पे भागने वाली race नहीं है, right? तो racial discrimination का मतलब है कि एक अलग प्रजाति है, एक अलग जाति है और एक दूसरी जाति है, इस तरह से. So this was prevailing in South Africa. तो वहां पे white people rule कर रहे थे, वही अपने आप को superior समझते थे, और जो black people थे उन्हें उनके सारे ही rights से deprive किया हुआ था, मतलब उन्हें उससे वंचित रखा हुआ था. So they were deprived of their rights. They had no freedom. They had no choice
Even their they had different hotels. They were not allowed to go into the hotels where the white people used to go. They had separate beaches. उनके घर भी बिल्कुल अलग ही locality में होते थे, बहुत ही poor localities. So they were living in poverty. They did not have freedom, equality, और जो opportunities होती हैं वो उनको नहीं थी. बहुत सारे restrictions थे उनके ऊपर. This was apartheid system. So these black people were against this system. तो बहुत सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया एंड नेल्सन मंडेला बिकेम देयर लीडर और उन्होंने भी बहुत सफर किया और यू नो द ब्लैक वर टॉर्चर्ड देयर दे सफर्ड वेरी बैडली एट द हैंड्स ऑफ द वाइट बहुत ऑप्रेस किया जाता था उन्हें सो these two words are important oppression and brutality oppression क्या होता है कि उनके विद्रोह को दबा देना they were always oppressed मतलब whenever they tried to raise their voice they were subjugated उन्हें हमेशा दबा दिया गया कि नहीं आपको कोई राइट नहीं है you cannot raise your voice against our laws तो ये था white rule उनकी superiority दूसरा brutality they were very brutal मतलब बहुत ही क्रूर निर्दयी they used to beat them they used to put them behind bars और वहां पे भी उन्हें बहुत मारते थे तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चल रहा था अब ये दो चीजें समझने के बाद अब आते हैं हम चैप्टर पे तो व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट तो दिस चैप्टर इज अबाउट ओथ टेकिंग सेरेमनी तो जब अफ्रीका became the national democratic in 1994 तब वहां पे this oath ceremony took place अब इस सेरेमनी में क्या हुआ था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन where did this oath ceremony take place तो नेल्सन मंडेला ने जो ओथ ली थी एज द प्रेसिडेंट उस सेरेमनी की यहाँ पे बात हो रही है एंड नेल्सन मंडेला इज गिविंग अ स्पीच हियर तो उस स्पीच का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हमें समझना है दैट इज योर चैप्टर तो सबसे पहली चीज कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी दिस वाज इन सैंडस्टोन थी एम्फी थिएटर ये होता है एम्फी थिएटर दिस इज कॉल्ड एम्फी थिएटर जहाँ पे इट इज देयर इज ग्राउंड हियर एंड इट इज सराउंडेड बाय द सीट्स यहाँ पे जो ये सीट्स होती हैं इस तरह से सो हियर सो मेनी पीपल कैन सिट सो इट हैपेंड इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया ये आपको याद रखना है ये एम्फी थिएटर है और ये एम्फी थिएटर कहाँ पे था दिस वाज इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया प्रिटोरिया इज द प्लेस इन साउथ अफ्रीका वेयर दिस ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस तो चारों तरफ लोग बैठे हुए थे और बीच में ये सेरेमनी हो रही थी why they took this अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये oath ceremony why this took place in this amphitheater reason क्या था तो the reason was कि there were politicians and dignitaries from all over the world मतलब more than 140 countries had participated in it तो 140 से ज्यादा कंट्रीज के जो डिग्नेटरीज थे बहुत सारे लोग वहां पे आए हुए थे एंड इवन देयर वर पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आल्सो द ब्लैक व्हाइट एवरीवन तो सभी लोग वहां पे they had gathered so they needed a very big place actually just to accommodate that crowd है ना ताकि सब लोग वहां पे आ जाए so this happened so this was the ceremony अब एक और क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला सेज कि दिस 10th May 1994 अब ये जो 10th May है दिस इज द ओथ टेकिंग डे जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी तो दिस वाज इन 1994 तो इसको ऑटम डे क्यों कहा है नेल्सन मंडेला कॉल्स दिस डे एज ऑटम डे क्यों why does he call it an autumn day now that is the question तो ये एक important question है which is asked in the examination तो इसका अब समझ लेते हैं कि इसको autumn day क्यों कहा है इस दिन को जैसे autumn में what happens कि the old leaves fall down जो brown leaves होती हैं dry leaves होती हैं they fall down and gradually new leaves are sprouted are germinated on the tree so likewise it's a metaphor here अब इसको कैसे समझोगे आप कि the tree of साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका तो अब जो साउथ अफ्रीका था 1994 में इट हैड शेड अवे ऑल द ड्राई लीव्स अब ये ड्राई लीव्स क्या सिंबलाइज करती हैं यहाँ पे apartheid सिस्टम which was prevailing there जो भी हमने समझा है there was discrimination है ना जो white people थे they always discriminated the black people there was brutality they were beaten mercilessly उन्हें मारा जाता था बहुत ज्यादा पिटाई करते थे कई बार जान से भी मार देते थे
There was oppression. Oppression मतलब उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, है ना? They were oppressed. So this you have to understand. So all these things ended. तो जो ओल्ड लीव्स थी ये गिर गई, एंड नाउ ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, एकदम से नहीं आएंगी ये लीव्स, नई जो ग्रीन लीव्स है, दे विल कम ग्रेजुअली. नाउ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, अब साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक बन गया है, नाउ दैट अपार्टाइड सिस्टम इज नॉट देयर, सो नाउ देयर विल बी न्यू लीव्स, एंड दीज आर द लीव्स ऑफ इक्वालिटी. नाउ एवरीबडी हैज गॉट इक्वल राइट. व्हाइट और ब्लैक, वहां पे व्हाइट भी रहते थे साउथ अफ्रीका में अब 1994 से, और ब्लैक, बट दे लिव्ड with equal rights and opportunities. They had dignity. Dignity मतलब एक respect. अब they were not humiliated now. पहले उन्हें humiliate किया जाता था, arrest कर लेते थे, अपनी बात नहीं कह सकते थे वो black people. But now they have that dignity. Other thing is peace. Now how this peace took place there, because now there were no conflicts. अब आपस में conflicts नहीं हो रहे हैं कि the black are against the white or the white are against the black. These kind of things have also ended. And other thing is justice. Now there is justice. पहले वहां पे justice नहीं था, सब जो white ने कह दिया that is final, but now that kind of system was not there. अब वहां पे जस्टिस था, सबको इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, सबकी रिस्पेक्ट भी यहाँ पे अब इट वाज इंटैक्ट. सो एंड देयर वाज अ पीसफुल ambience environment in South Africa. So that's why it is considered as an autumn day. So if this question is asked, you have to talk about the tree of South Africa has shed away the leaves. These are the leaves, and now new leaves will germinate on the tree of this South Africa. So next, let's move on to the next. Now, other question which is asked here is Nelson Mandela's pledge. Pledge मतलब oath, जो उन्होंने शपथ ली थी, उसमें क्या था? Now, here you have to include 2 points. Number 1, he pledged to obey and uphold the Constitution. And the other thing was to devote, he said, I will devote myself to the well-being of the Republic and its people. Now, इसका क्या मतलब है? ये बुक की ही लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, and I will explain it now. Now, जब उन्होंने प्लेज ली, जब उन्होंने शपथ ली as the president of South Africa, so he said that I will abide by all the rules of my constitution. तो मेरे country का जो constitution है, जो laws बनाए गए हैं, I will abide by them. Abide by them मतलब I will follow them very honestly. तो मैं अपने रूल्स नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अब मुझे पावर मिल गई है तो मैं उस पावर को मिसयूज करूंगा और आई विल मेक माय ओन रूल्स वेयर यू नो द ब्लैक पीपल विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. ऐसा नहीं होगा जैसे व्हाइट ने किया था. जब उन्हें पावर मिली तो उन्होंने उसको मिसयूज किया उस पावर को, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू दैट. तो जो लॉज बना दिए गए हैं जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो नाउ ही विल रिस्पेक्ट दैट और वो उन्हें ओबे करेंगे वेरी ऑनेस्टली. सेकेंड थिंग व्हाट ही सेड कि एक लीडर का काम क्या होता है, एक जो प्रेसिडेंट है, व्हाट ही इज सपोज टू डू, उसको अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए काम करना होता है. And this is what Nelson Mandela pledged about. You know, so he said that now it's my duty that I have to work for the welfare of my people. You know, he has to work for the economical development of his country. That is more important. Other thing that we have to understand is that, you know, he wanted to abolish the poverty, deprivation, you know, the suffering that was there, gender discrimination. So there were so many problems that people had there. तो वहां पे इक्वालिटी नहीं थी पहले. So now he wanted to establish all that, you know, because apartheid system had ended, but still people were poor. People did not have you know, good opportunities, job opportunities, education nahi thi wahan pe. So now he had to work for that, okay, his all the people, not only the black but everyone should have good education, should have good opportunities, and there should not be any poverty. So he now wanted to work for that. Now this thing you have to remember, and put commas here. Poverty, deprivation, suffering, and gender discrimination. So all these things he wanted to abolish.
Now let's come to the next point. Nelson Mandela says कि today, this thing is an extraordinary human disaster. अब वो किस बारे में बात कर रहे हैं? What he's saying, what do you mean by extraordinary human disaster? Now, this disaster is actually the practice of apartheid system in South Africa. हमने इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, तो आप वही पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे कि किस तरह से पीपल वर सब्जुगेटेड. कीवर्ड्स याद रखना है आपको. पीपल वर ऑप्रेस्ड, पीपल वर डिनाइड देयर डिग्निटी, रिस्पेक्ट, देयर वाज नो जस्टिस फॉर द ब्लैक पीपल. तो ये थी ह्यूमन डिजास्टर जहाँ पे ह्यूमैनिटी वाज क्रश्ड. ह्यूमैनिटी को पूरा क्रश कर दिया था कि आप अगर कोई ब्लैक है तो क्या उसे मतलब ही डजंट हैव दैट राइट टू लिव रिस्पेक्टफुली एंड विद डिग्निटी. दैट इज वेरी रॉन्ग. सो दिस वाज अ ह्यूमन डिजास्टर. लेकिन इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहा है मंडेला ने? क्योंकि ऐसा पहले और कहीं नहीं हुआ है. मतलब इतना जो सब्जुगेशन है, जितना ब्लैक पीपल ने सफर किया है अपनी ही कंट्री में, दिस माइट नॉट हैव हैपेंड एनीवेयर. सो ही कॉल्स इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये बहुत सामान्य आम बात नहीं थी. ठीक है. दूसरी चीज, सेकंड क्वेश्चन एक आ सकता है कि व्हाट इज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. अब ये भी आपको समझ आ गया होगा एज वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर. सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट इज द अचीवमेंट, that number one, the glorious achievement is that apartheid system has ended. So that long suffering, that oppression, brutality, that has ended. वो सब खत्म हो चुकी है. And now what is there? Now there is justice, peace, human dignity. So this is human achievement, glorious human achievement. यहाँ पे अब इंसान को इंसान समझा जाएगा, right? And now the black people will also be able to live with that respect, that dignity. पहले क्या होता था कि अगर ब्लैक पीपल व्हाइट एरिया में चले गए तो दे विल बी शॉट. उन्होंने क्लियर रूल्स बनाए हुए थे. आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9th में. You have a chapter in social science, so you have seen that how these people were treated there, so you can better understand this thing. So ये जो apartheid system था, ये एक human disaster था, और इसका जो end है, और अब जो ये justice, peace, dignity which is established, वो क्या है? That is human achievement, glorious human achievement है. तो if you remember these keywords, ये याद रखना है आपको, so you will be able to write a very good answer on your own. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला क्यों थैंक करते हैं? Why does he thank these leaders? Mandela thanks them for attending this oath taking ceremony, because here पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका वाज कंसीडर्ड एज आउटलॉ. मतलब उसको बिल्कुल ही किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता था, बिकॉज द कंट्रीज वर वेरी मच ऑफेंडेड विद द सिस्टम देयर. तो साउथ अफ्रीका डिड नॉट हैव दैट इम्पोर्टेंस. लेकिन आज इतने सारे लीडर्स, वर्ल्ड के लीडर्स, डिग्निटरीज, इतने डिग्निटरीज मतलब द पीपल हु होल्ड वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन देयर कंट्री, तो वो लोग यहाँ पे आज आए हैं, शामिल हुए हैं इस सेरेमनी में. तो नाउ इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी. तो ही इज थैंकिंग देम कि थैंक यू सो मच दैट यू हैव कम एंड यू हैव अटेंडेड दिस सेरेमनी. दूसरी चीज के आज ये सेरेमनी अटेंड करके उन्होंने उन्हें और रिस्पेक्ट दिया है. दे हैव गिवन देम मोर रिस्पेक्ट, क्योंकि पहले उन्हें बिल्कुल भी एक डिग्निटी, रिस्पेक्ट मिलता नहीं था. सो नाउ दे हैव गॉट दैट रिस्पेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक उन्हें एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, सो दैट्स व्हाई ही इज थैंकिंग देम. और दूसरी चीज के आज ये जो विक्ट्री है, ये सिर्फ विक्ट्री साउथ अफ्रीका की नहीं है. This victory is actually for justice, peace and human dignity. ये ह्यूमैनिटी की जीत है, ये मानवता की जीत है. तो इस तरह से नेल्सन मंडेला is talking about these various ideals. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आपको अपार्टाइड सिस्टम के बारे में पता है तो सिर्फ आपको वही मेन पॉइंट याद रखने हैं, और ये सारी चीजें आपको बार बार कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू रिपीट देम वेरी स्मार्टली. एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द आइडियल्स नेल्सन मंडेला set for future of South Africa? So what ideals did he set? That we have to see.
तो नेल्सन मंडेला set the ideals of liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि नेल्सन मंडेला ने ये प्लेज भी ली थी और यही उन्होंने आइडियल्स भी बनाए थे कि आई विल फ्री माय पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, ताकि कोई भी गरीब ना हो सबके पास, क्योंकि जब उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो डेफिनेटली दे विल नॉट रिमेन पुअर. अदर थिंग इज डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन क्या होता है कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. डिप्राइव्ड ऑफ मतलब उनको बहुत चीजों से वंचित रखा गया था. दे डिड नॉट हैव दोस थिंग्स. सो नाउ दैट वाज द टाइम दैट ही वांटेड टू गिव देम एवरीथिंग. जो पहले उन्हें नहीं दिया जाता था, जिन चीजों से उन्हें दूर रखा जाता था, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई फैसिलिटी है, जैसे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है. आपको याद होगा कि गांधी जी was also thrown outside from the first class compartment of a train. तो उनके हिसाब से उसमें सिर्फ white people ही travel कर सकते थे. तो वो है deprivation. तो now he wanted to just end everything, all these negative things and suffering. जितना सफर किया है वहां के लोगों ने, तो he wanted to end that. ये आइडियल्स है वो साउथ अफ्रीका के लिए सेट करना चाहते हैं. He also set the ideal. मैंने यहाँ पे set लिखा है, it is actually past, इसलिए यहाँ पे set लिखा है. For a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin. एक सबसे important चीज है कि हमने politically तो एक चीज को खत्म कर दिया, बट अभी हमें उसको और अच्छी तरह से implement करना है कि वहाँ पे कोई भी racial जो एक पहले मतलब जो black people थे उन्हें जिस तरह से treat किया जाता था, that should not be there. So he wanted to end that. तो ये आइडियल्स हैं कि अपनी कंट्री को बेटर बनाना है. आप इसमें जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स दिए हैं उन्हें भी ऐड कर सकते हैं. तो पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग को खत्म करना है. ही वांट्स टू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी, डिग्निटी एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है. एक और चीज समझ लेना यहाँ पे कि वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था. जैसे व्हाइट तो ब्लैक को डोमिनेट करते ही थे, बट अमंग व्हाइट पीपल ऑल्सो जो मेल्स होते थे वो अपने जो फीमेल पार्ट है उसको भी डोमिनेट करते थे. जैसे हस्बैंड यूज्ड टू डोमिनेट द वाइफ, वाइफ डिड नॉट हैव दैट डिग्निटी. तो मंडेला वांटेड टू एलिमिनेट दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको, जहाँ पे women आर डिनाइड दैट रिस्पेक्ट, दैट इक्वालिटी वो नहीं थी, तो उन्हें उसको भी एस्टैब्लिश करना था. तो ये सारी चीजें हैं which Mandela wanted to really he pledged in this oath taking ceremony on 10th May 1994. तो एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक दिस तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड यू सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच more videos.